Welcome student. Today we will start the science 2 first chapter, that is our heredity and evolution. Okay, before I start the chapter, just write the meaning of the heredity. Heredity is what? It is a transfer of biological character. It is a transfer of biological characters from one generation to the next generation. That is parents to the offspring. Offspring का मतलब होता है child. Okay, all the biological character will be transferred from one generation to the next generation. We had done the heretic concept in our ninth standard also. And evolution का मतलब होता है कि gradually changes. evolution मीन्स होता है changes. Okay, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे heredity और evolution. Okay, first see here, heredity and the hereditary changes. You know that heritage transfer of biological characteristics from one generation to the next, another via genes. Just underline this part. It is a transfer of the biological characters from one generation to the another via genes. Okay, genes के थ्रू ये क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांसफर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट, John Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics around the period of 1886. It took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. अगर आप लोगों को याद होगा 9th में भी हमने पढ़ा था मेंडल्स के बारे में, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड of heredity. Okay. Next, in 1901 the reason behind the sudden changes were understood the national theory of Hugo de Bres. Meanwhile, 1902 Walter and Sutton observed the pair of chromosomes in the cell of grasshopper. अंडरलाइन करो, वॉल्टर और सुटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्रोमोसोम. कहाँ पे? किसके सेल पे? ग्रासहोपर के सेल में. ओके, अगर फिलअप में आता है डैश हैड ऑब्जर्व द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द grasshopper, तो व्हाट यू विल राइट? डैश एंड डैश ऑब्जर्व द फर्स्ट pair of chromosomes in the cell of grasshopper. Which scientist? That is our Walter and Sutton. Next, until then it was not known about to anyone. Research started in the direction of finding the nature of the genetically material when it was approved that genes are carried via chromosomes. You all know genes किससे आगे जाता है स्टूडेंट? Chromosomes. Chromosome consists of DNA and DNA consists what? Genes. Though which 1944 trio of scientists, which three scientists, Oswald Avery, McLean McCarthy and Colin McLeod, proved that except virus, all living organisms have DNA as a genetic material. Means what? वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब में क्या है? डीएनए है. और आप सबको पता है डीएनए एक दूसरे का सबका क्या होता है? अलग होता है. नेक्स्ट. Okay, now next one. In 1961, the French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for the process of protein synthesis with the help of the DNA in the bacterial cell. It helped to uncover the genetics code hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged which has vast scope in the field of genetic engineering. See, genetic engineering is nothing but it is a study related to our genes. Okay, and also the two scientists, that is our Francis Jacob and Jacques Monod, had proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. यानी बैक्टीरियल सेल में DNA की मदद से हम कैसे प्रोटीन फॉर्म आउट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडेटरी डिसऑर्डर. हेरिडेटरी डिसऑर्डर जो हमने 9th में पढ़ा था, जो डिजीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं यानी चाइल्ड तक आते हैं, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा. ओके, तो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज, ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड ऑल्सो इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड. I hope you understand till here. Now next part we will start the transcription, translation and translocation. These three are very much important and very much interesting.
Just you recover these topics, transcription, translation, and translocation. Go through it thoroughly.